Assalamualaikum student. Today we will start exercise number 1.1 which is related to factors and multiples. First of all we will discuss the factors. Factors are those numbers which can is the most important word because some numbers can be divisible and some cannot be not. So factors are those numbers which can divide by the given number exactly mean नो रिमाइंडर. सो फैक्टर्स आपके वो नंबर्स होते हैं, आपको वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर सकें. So we have a multiples. Multiples are those number which are mean जो होते हैं, जो exactly divisible हैं. So multiples are those numbers which are exactly divisible by the given number. कि आपको वो numbers लिखने हैं जो आपके given number से exactly divisible हैं. Multiples, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस होता है. फैक्टर्स में आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो आपके गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करें, और मल्टीपल्स में आप वो नंबर्स लिखते हैं जिनसे आपका जितने भी आप वो जो भी नंबर्स आप लिखेंगे वो आपके गिवन नंबर से डिवाइड होने चाहिए. सो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. Question number 1 which is related to factors. So let's see, we will take 30. We always start with the 1. आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 1, then we have go with 2, 3, 4. Always start with the smallest number and then go with the highest number. 1 and the given number is always included in your factors. वो हमेशा आपके factors में included होता है क्योंकि 1 से भी आप उसको divide कर सकते हैं और 30 से भी वो divide होता है. So आपको वो numbers लिखने हैं, factors वो numbers होते हैं जो आपके given number को exactly divide कर सकते हैं. So firstly we will write down 1, then we will check with 2. आप 2 को divide करके देख सकते हैं, और अगर आपको टाइम टेबल आता है इट्स वेरी गुड. सो 2 1 times 2, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस, राइट डाउन 0. सो 2 5 times 10, सो इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल. 2 15 times 30. सो सेकेंड फैक्टर आपका 2 है. देन वी विल गो विथ 3. 3 10 30 होता है. 4 से आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 15 से डिवाइड कर सकते हैं. सो आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनसे आप 30 को डिवाइड कर सकते हैं. सो वी विल रिवाइज द डेफिनेशन. फैक्टर्स आर दोज नंबर विच कैन मीन कि जो कर सकता हो, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए. सो 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, आप 3 से कर सकते हैं, आप 5 से कर सकते हैं. यू कैन डिवाइड विद 6, यू कैन डिवाइड विद द 10, यू कैन डिवाइड विद 15, यू कैन डिवाइड विद 30. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड योर गिवन नंबर exactly. Another question, let's see, we have 65. So 65, first of all write down 1. 1 से तो divisible है. 2 is not possible, 3 is not possible, 4 is not possible. Let me check with the 5. So हम 5 से check कर लेते हैं. 5 1 time 5 minus 6 minus 5 1, write down 5. So 5 3 time 15. So it's exactly divisible, no remainder. So 1, then we have 5 13 time and 13 5 time. So it double cross आपका क्वेश्चन होता है 15 and then the last number is 65. So factors are those numbers which can divide your given number exactly. can का मतलब जो कर सकता हो. 2 नहीं डिवाइड करता 65 को. सो आपने फैक्टर्स में हमेशा वो नंबर्स लिखने हैं जो आपके नंबर को डिवाइड करते हो. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is related to multiples. Multiples mean those numbers which are divisible by given number. तो इसमें मोस्टली टाइम्स टेबल लिखते हैं. अगर आपसे अब if the question is write down first 4 multiples, write down first 6 multiples. So आपको टाइम्स टेबल ही लिखना होता है. You need to understand the proper definition. Definition is the numbers which are divisible. वो नंबर आपको लिखने होते हैं जो exactly divisible होते हैं आपके given नंबर से. So अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 7, so I will write the timetable of 7 and the question is first 5 multiples. So first 7 1 times 7, 7 2 times 14, 7 3 times 21, 7 4 times 28, 7 5 times 35. So you can see, write all the numbers which are divisible. Yes, these all numbers are divisible by
7. So let's see, we have another question is 13. सो 13 के आपको फर्स्ट 5 अगर मल्टीपल लिखने हैं, सो आप 13 के फर्स्ट 5, फर्स्ट इफ द क्वेश्चन इज राइट डाउन ओनली द 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल्स, तो आपको उतने ही मल्टीपल लिखने हैं. लेट 13 1 टाइम 13, 13 2 टाइम 26 एंड 13 3 टाइम 39. सो टाइम टेबल में मोस्टली आपको जो है टाइम टेबल ही लिखना है. द क्वेश्चन इज राइट डाउन ओनली फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, तो मैंने फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखे हैं, बट प्रॉपर डेफिनेशन इज दैट राइट डाउन the numbers which are exactly divisible by given number. वो numbers आपको लिखने हैं जो आपके given number से exactly divisible होते हैं. Now the next topic which is related to the prime numbers. Prime numbers are those numbers which have only 2 factors, जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं. So it's 1 and itself, यानी कि खुद से. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. एक ये 1 से डिवाइड होते हैं और एक इटसेल्फ डिवाइड होते हैं. सो प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड विद 2. आपको स्टार्टिंग भी याद होनी चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होती है. तो प्राइम नंबर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन. डॉट का मीनिंग होता है सो ऑन, कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन. सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ. सो 2 को आप सिर्फ 1 एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को आप 1 एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो आपको वो नंबर्स लिखते हैं, राइट डाउन ओनली दोज नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. लेट मी टेक अ एग्जाम्पल. अगर मैं 9 एग्जाम्पल लेती हूँ तो 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ये प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज ये 1 से डिवाइड होता है. वी कैन डिवाइड विद 3, वी कैन डिवाइड बाय 9. सो मोर देन 2 फैक्टर, सो वी विल नॉट कंसिडर एज अ प्राइम नंबर. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. लेट मी टेक इट सम 7. सो 7 को आप सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इटसेल्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द प्राइम नंबर. तो ये आपका प्राइम नंबर होता है. Then we have a example is even numbers, जो कि आप क्लास 3 से आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, 1 से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. सो even numbers are those number which are exactly divisible by 2. Even numbers, it's always started from or always started from 0, 0, 2, 4, 6, 8. So you can see all the numbers are divisible by 2. It's always started with 0. If you have a 0 in the numerator, its answer is always 0. आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो अगर आपके न्यूमिनेटर में 0 होता है, सो आंसर इज 0. बट इफ़ यू हैव अ 0 इन द डिनोमिनेटर, सो इट स्टैंड फॉर द इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल. इट्स अनलिमिटेड डिविजिबल होता है. सो इसलिए 0 में अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 0 अवेलेबल हो, तो आपका आंसर हमेशा 0 होता है. एंड द नंबर्स, इवन नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0. So it's 2, 4, 6, 8 and so on. Then we have odd numbers. Odd numbers are those numbers which cannot divisible by 2, जिनको आप 2 से divide नहीं कर सकते हैं. And it's always started from 1. So 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So these numbers cannot be divisible by 2. Even numbers are divisible by 2 and odd numbers which cannot divisible by 2. Then we have a topic is natural number. So natural numbers are those numbers which are started from 1, 2, 3, 4, 5 and so on. जो हम अपनी लाइफ में डेली यूज़ कर रहे होते हैं नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग के लिए, क्वांटिटी के लिए, आप डिफरेंट चीज़ों के लिए आप यूज़ कर रहे होते हैं. सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स. देन वी हैव अ होल नंबर्स. Whole numbers are always started from 0. So 0, 1, 2, 3, 4. The little difference between natural numbers and whole numbers is natural numbers are started from 1 and the whole numbers are started from 0. Then we have a numbers which are called composite number. Composite, combination.
कॉम्पो से आप जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं कि कॉम्पोजिट इट्स द कॉम्बिनेशन नंबर. सो कॉम्पोजिट नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. इसमें आपके पास इवन नंबर भी होते हैं, ऑड नंबर भी होते हैं, बट फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्पोजिट नंबर्स आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 4, not 0, not 1, not 2. Composite numbers are always started from 4, 6, 8, 9, 10, 12 and so on. And now I will explain the definition. Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. Which have more than 2 factors. Composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. It's mean the numbers which can divided by more than 2 factors. Let's see 4. 4 is a composite number because it is divisible by 1, it is divisible by 2, it is divisible by 4. So more than 2 factors. Let's see, we have a 15. So 15 is divided by 1, it's divided by 3, it's divided by 5, it's divided by 15. So you can see more than 2 factors. Let's see, we will take 7, which is prime number. 7 is only divided with 1 and 7. So it is a prime number. So difference between the composite number and the prime number is prime numbers have only 2 factors and composite numbers have more than 2 factors. प्राइम नंबर्स आप सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और कॉम्पोजिट नंबर में आप मोर देन 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सो यू कैन रिमेंबर दिस टॉपिक. One important information is that all the prime numbers are odd. All the prime numbers are odd. Only 2 is the even prime number. Only 2 is the even prime number. Otherwise, all the other numbers are odd. So these are the basic definition, basic concept for your today's topic. When you understand these definitions and the numbers, you can easily find the answers of the word problems. I hope you understand this. Kindly remember me and my parents in your good prayers. Thank you so much.